Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is the solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. Hello everyone, this is Nishal Mittal. I secured first All India rank in Indian Economic Service, which was the result of which was released I think 2 days back. So here I am. I will talk about my strategy, how to clear this exam, how you can use some of my strategy points in your case, and how you can make it relevant to you. Before that, I would talk about my background. So I am basically from Bayana Tehsil, Bharatpur district of Rajasthan, where my schooling was done. After that, like in 11th-12th, I prepared for joint entrance examination for engineering for IITs. There actually I cleared the cutoff for mains and advanced both exam, but I didn't get the desired college and branch. So I just decided to pursue Bachelor's of Science from Rajasthan University, and by God's grace I got Maharaja College, Rajasthan University in Jaipur. So actually before that in 10th class I was having a good amount of interest in social science. During bachelor's I got this opportunity to get economics as one of the subject in my graduation. So there I decided that, and I think that became a turning point for my life. I just developed this interest in economics, and then I think then I decided to pursue masters in it, and by God's grace there were I think several colleges which I cleared the entrance. I think Ashoka, IJDR, DSE, all these entrance were clear. In the DSE then I pursued my masters from Delhi School of Economics in 2022. Post that I got placed as an authorized officer in UBS. So since July 2022 I am working there, and along with the job I have prepared for this for Indian Economic Service. So now I will talk about my strategy. Before that I think it is very much relevant for everyone, that whatever I am saying, whatever my strategy was, you just need not to follow every part of it. You just need to take some part of it, and you can make you need to make it customized for you, because every person is different, every circumstance for that person is different, and the strategy and whatever applies to me, it doesn't necessarily that applies to you. So that is something which I will give as a disclaimer before this. So in November, I think in November 2022, when I was on my job, I decided to pursue the preparation for Indian Economic Service, and along with that I also thought that I would give the exam of RBI DPR, but the main point was for me for Indian Economic Service. So whenever you decide it, right, whenever you decide for Indian Economic Service and any other kind of UPSC exam, you just need to understand that there is a rigorous syllabus of them. They have large amount of syllabus, and that requires rigorous efforts from your side as well. So all these things you need to take in mind, and whenever you are taking the decision to appear for Indian Economic Service kind of exam, you just need to make sure that whatever, there will be many struggles in your life, there will be many problems in your life which it will bring, but you just need to focus upon this Indian Economic Service. You need to show the dedication, and you need to that is the only key which will survive, which will make you survived in this all the tense environment before your written exam. So
Yes, I started this in November 2022, and I just saw the syllabus. Syllabus, you need to analyze it very much, because you have done the masters in economics, so you will have some knowledge already that from which topic can be done from where. So you just not need to follow every like whatever other toppers are saying. Yes, you can refer to topper stocks and everything, but just need to see that if you can do some topic from your favorable area, your favorite book, then that is sufficient. I don't think that you just need to follow the book list provided on different sources. So syllabus, after analyzing syllabus, you just need to see that from where you need to start. That is the point where which will bring the biggest tension for you. How, from where will you start? So I started particularly from third general economics third paper, because it looked so much relevant for me. So then like I just got through like whatever for the every topic, how can I do, how from where I can do. So you just need to go through the different dimensions of every topic for every paper. If I talk about all the general economics, all the four economics paper, the first general economics paper, that is that it is mathematical kind of paper. And I think since in our cycle, like for us, general economics one paper was quite difficult. Like it was more difficult than how it would have been in the previous year. So they are making it difficult, not in the sense that we do not know the answer. It is that we can't attend that paper in 3 years, like 3 hours. So you need to focus upon the mathematical part. You need to focus upon how you make the logics of the thing, how it is relevant for this. And econometrics part and this mathematical economics part, they you need to focus upon, you need to focus very much on these topics. Then we come to general economics 2 paper. That is something which is having a vast syllabus, and you need to connect every of the topic here. So all these things are in a sequence which have been given in the syllabus, and you need to establish a chain in between them. And it is something like that. You can't just prepare one topic in just isolation. No, it is connected to every part of it. So it will take your time. General economics 2 will take your time. Similarly, for the general economics 3, I think the environmental economics, general economics 3 paper is quite a scoring paper. So if you like, it is not that much large amount of syllabus. Here the problem will be that you will not get from this topic can be done from where. So you have some book list. It is provided on different sources. So that from there you can see what is suitable for you, and from there you can do that. I think for environmental economics, people refer this IGNOU site for the resources. So I think that is something I also did. For Indian economic exam, I think there are different kind of book referred for that. So yes, all these syllabus are very much like vast, and you need to understand every topic. You need to work around this thing, and yes, you need to establish a channel between all of these things. So coming to the next part, I think book list and resources, I think that is something which we can touch upon. So for the book list, I think there is a site website, this project IES. There I think there are 2020 batch or 2021 batch. I think they have provided all the book list and all the resources list from where you can prepare these topics. As I said, it is not necessary that you need to go through only those book. जो भी आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए ठीक है, आप उस तरीके से जा सकते हैं, और हर बुक को पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है. कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली इस बुक में अच्छा है, यू ओनली गो थ्रू दिस. जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, जो GE2 का कोई टॉपिक है, तो इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट बुक्स. बट कोई एक बुक होगी जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए सूटेबल है यहाँ से करना, तो वहाँ से आपको करना पड़ेगा. मैंने काफ़ी सारी बुक रेफ़र की, लाइक फॉर द ग्रेजुएशन, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, आई न्यू सम बुक्स, आई वॉज फैमिलियर विद दैम, एंड फ्रॉम देयर आई रेफर्ड दिस बुक्स. So these book lists, these things are there. You can like for Indian economy, you can do this. I think Mishra and Puri also referred this one more book. I think Uma Kapila, that is also referred. But they will only provide the static portion. So for the dynamic portion, you need to go through newspapers and
newspapers, and I think different magazine provided by different coaching institute. You can also go through that. One is referred, I think, Vision, provided by Vision Coaching every month. That is also that can also be helpful. So these are the thing which you need to go through for this. Now coming to the next part, English and GS. So yes, these give you 200 marks out of 1000 in written exam. So they are not like not you many people say that they are not very much important. Yes, that is not very much important, but they are important. They can make you cross the line. So that's why they are important. So for GS, I think if you are going through newspaper daily, if you are going through these magazines daily, if you are familiar with what is happening in the current scenario, all these things will help you in GS. And you need to analyze the past year papers and all, that how they are asking the question, how they are doing that. So this is something which is very much important here. So for English, I didn't do any special thing for that. Yes, I didn't I didn't have the practice for the essay writing, but the situation was that I didn't have time for preparing for that as well. So what I did is that I just started to write some essay, I think in the last days only. I think when 20 or 30 days were left, then I started writing essays. And I went through what can be the different dimension. I think there are some guidelines that are provided by these civil service coaching institute, that how should you go through, how should you write the essays. But really it is like 30 marks question, so you don't need to you just need to try that you can cross 50 or 20 marks. So that is something which you can do. If you cross 50 or 20 marks, I think that is something which is very great achievement for the essay writing. So, and further part like prestige and all, I think this is something which comes with practice. I gave like I have appeared in some different competitions during my graduation and all. So I did have good knowledge on the prestige and all these things, paragraph thing. So yes, this is something for the English and GS. No need to dedicate much of the time, like a very large amount of time for these. But yes, a fair amount of time will be should be given, because they will make you cross the line. Also now now coming to the next part, I think past year question papers, that is something which is very important. I think if it is possible, you just need to solve these past year paper. And it is not just that you are just seeing the past year paper and you are just like okay, this question I know, मेरे को आता है ये, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं आपको जो भी आता है, आप you just need to write the answer, and that will make you answer writing practice as well. This is the most important part. I think it is very important that you might have some knowledge, but it's not necessary that you have some answer writing thing. You know how to write the answer. So you need for answer writing practice, you just need to write all these past year questions, and you will have a good knowledge, like good amount of questions there. So good amount of so you will have answer writing. Then second thing will that you will be familiar with how the questions are being asked. That is the most important part, because if you are like, let's say if you have read some topic right now, अगर आपको पास्ट पेपर कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डायमेंशन भी हो सकता है इस क्वेश्चन का, तो मुझे ये डायमेंशन भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जनरली वो पढ़ते हैं जो बुक में लिखा हुआ है. लेकिन यूपीएससी को मतलब नहीं है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, वो उसकी डिफरेंट डायमेंशन को पूछेगा. हर एक टॉपिक की एक अलग डायमेंशन हो सकती है, तो वो डायमेंशंस को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको पास्ट ईयर से ही पता लगेगा कि हाँ ये डायमेंशन भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस ईयर दे आस्क्ड लाइक 1991 का जो भी रिफॉर्म्स हुआ उसका आप क्रिटिसाइज करिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी थिंग. तो दिस इज समथिंग जो आप नहीं सोच सकते, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पेपर करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन करोगे, दैन यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके ये डायमेंशन भी हो सकता है. आप प्रिपेयर हो सकते हो इसके लिए. कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि फैमिलियर ही आ जाएंगे. तो आपको जो फैमिलियर है वो तो आप कर ही जाओगे क्योंकि आपने पास्ट ईयर कर रहे हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे वो भी आप कर लोगे क्योंकि आपने पास्ट ईयर किए हुए हैं. सो दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट ईयर करो. आई ट्राई टू राइट एवरी पास्ट ईयर सो दैट आई कैन लाइक माई आंसर राइटिंग कैन बी गुड. एंड यस, apart from that, in the answer writing thing, you need to present your answer. It is not that you are just writing and like they are checking for like more than 10,000 copies. So
how you can just if you are writing, like you need to present the answer so that they can understand in just one line, that in just one side, that okay, this is this what this person has written. Because if you see other toppers talks, and if you see other experienced people, they also say that when checking person actually checks the copy, he just get it how the answer has been written in just one side. So that's where you need to focus upon. So these are the things which will come you which will be handy for you. So now I am coming to one of the things which was customized for me, which was special for me. So I was preparing along with my job. So there are plenty of the people who are preparing for this. तो जॉब के साथ प्रिपेयर करने में का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 24 आवर्स नहीं है, जो कि अदर पीपल के पास होंगे ऑब्वियसली. बट एक फ़ायदा भी है कि आपका माइंड एक्टिव रहता है जब आप जॉब में रहते हो. हाँ, हो सकता है कि जॉब आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको लाइक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके दिमाग लाइक आपके माइंड के मोड को वन मोड से दूसरे मोड पे लाने के लिए. बट दिस इज़ द चैलेंज दैट वी हैव टू फेस, राइट. सो इस चैलेंज को लाइक मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना टाइम आप ऑफिस में, जितना टाइम भी आपके पास अवेलेबल है, देखो ऑफिस का टाइम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते. अगर आप उसको कहीं से आप कम कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, वो बहुत ही अच्छा है अगर आप कम कर सकते हो. मैंने किया था क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल था क्योंकि मैंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करी, पूरा माइंड इस चीज़ में लगाया कि मैं कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाऊँ ऑफिस के काम में, ताकि ऑफिस का काम पूरा हो पाए, मैं अपनी टीम की कमिटमेंट पूरी कर पाऊँ. मेरे ऑफिस के काम के साथ मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. एंड क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ी तो मुझे इतना टाइम डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वहाँ पे मैंने टाइम कम किया. दूसरा ये है कि जो अदर नॉन ऑफिस टाइम है वहाँ पे आप कैसे टाइम बढ़ा सकते हो. ऑब्वियसली लाइक आई ट्राई टू रिड्यूस माई स्लीपिंग टाइम. मैंने अपना स्लीपिंग टाइम थोड़ा सा कम किया. ये नहीं है कि लोग तो 3 या 4 घंटे सो रहे हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट. बट आप अगर 9 या 10 घंटे सो रहे हैं तो आप 6 या 7 घंटे उसको कर सकते हैं. इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, लाइक आप धीरे धीरे आप कर सकते हैं इस चीज़ को. और बाकी चीज़ों में भी हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली. तो आप उसको अगर कम कर देंगे तो आपके लिए वो टाइम कहीं से आएगा. और अगर आप कहीं से भी लाइक 6 to 7 आवर्स डेली निकाल पा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल हैं, राइट, क्योंकि आपको जॉब पे नहीं जाना है. बट अगर आप कहीं से भी वीक डेज पे 6 या 7 आवर्स निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच सफिशेंट. वो बहुत है. बट आपको ज़रूरी है कि आप एफिशिएंसी दिखाएं वहाँ पे, क्योंकि एफिशिएंसी मैटर्स. जिस बंदे के पास 24 आवर्स हैं उसको ये वो कॉम्प्लिसेंट हो जाता है कभी कभी कि मेरे पास टाइम है, मैं कर लूँगा, मैं धीरे धीरे कर लूँगा. तो जबकि हमको पता है कि हमारे पास 6 घंटे, तो हमारी एफिशिएंसी भी इस हिसाब से होनी चाहिए. तो मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैंने कैसे लाइक मेरे को ये देखना कि कहीं से टाइम मिले. और मैंने बहुत मतलब बहुत इसी के स्ट्रगल किया कि कहीं से कैसे टाइम मिलेगा. तो वही बस उसी चीज़ का चलता रहा. अगर आपको अपनी जॉब से छुट्टी मिल जाए, दैट इज़ वेरी गुड. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. But like it is, I would always suggest that if you are dedicated for this job, right, if you want to do this, if you want to just give the advisory over the policies to ministry, to government, if you just want to work about the social topics in India, so you don't need you should not need to do the job if that is feasible for you. You can leave the job and you can just prepare for this. I can definitely say that you will crack it if you have dedication, if you have support, if you have this hard work thing for you. This is for the written exam, but the thing is that all these things make you knowledge base good. If you have knowledge base, good amount of knowledge base, strong knowledge base, then you will have the plenty of advantage. But it is not enough, right? Knowledge can be there. You need to present the answer, and you need to present that knowledge and your answer. You need to show this. And you need to understand all the dimensions that will be helpful for you in writing the exam. And remember that this exam is conducted in 3 days with 6 papers on in total. So 2 papers every day and 3 hours. So writing speed, everything is required. So you need to prepare your mind yourself for that. I think बोलते हैं ना कि हद से गुजर जाना, मतलब इस चीज़ के लिए आप रिटन एग्ज़ाम तक आपको हद से गुजर जाना ही पड़ेगा. मैं काफ़ी ज़्यादा हद से गुजरा था इस चीज़ के लिए. और मुझे पता क्योंकि मैंने स्टार्ट किया नवंबर 2022 में. और स्पेशली वन थिंग ऑल्सो आई वुड वांट टू मेंशन दैट मैंने ग्रेजुएशन में नहीं सोचा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं सोचा था कि मुझे ये प्रिपेयर करना है. मैंने दिमाग में था, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं. मैंने कहा कि यार DSE में
मैं जितना भी कर रहा हूँ प्रिपरेशन, जितना भी कर रहा हूँ, जो भी मैं कोर्स है मेरे पास, मैं उनको अच्छे से पढ़ूंगा. दैट इज़ क्वाइट मच सफिशिएंट फॉर मी. लेकिन जैसे जो जॉब में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे पॉलिसी में जाना है, क्योंकि डीएससी में कुछ कोर्सेज थे, लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड आईएसआई एंड सम ईडीपीआई कोर्स. दैट इज दीज वर सम वंडरफुल courses in DSE, which actually helped me to identify that okay, I have to go toward policy side, I have to go toward advisory side. So मैंने कहीं लाइक मेरा बचपन से सपना नहीं था ये, बट मैंने स्टार्ट किया अराउंड अक्टूबर नवंबर 2022, and I can say that it was around 8 to 9 months preparation that helped me. And you can understand that you need to think that like this is something where I have been efficient, I managed my time, the dedication, all these things helped me to clear the written exam. Now coming to the interview part, so that is also one of the most important part of your journey of this preparation thing. So I for the first, like for the written part, I did self study. I joined one test series for this, and that test series helped me to identify where I have to improve my answer. So that test series was from the Nishan sir, so that I did that I did from Nishan sir. And I think you can do any kind of test series, but please make ensure that they they are providing the good amount of they are providing some remark for you that okay, here you can improve upon. I actually choose Nissan sir because I prepared for DSE with EcoPoint, so I was quite familiar with with him for this topic, like for the preparation part. So I just chose him, and I think his timing of this test series was also relevant for me, because I just started in November and he starts this in January, so that was relevant for me. I think you can take other test series as well, but remember that your answers should come on time, and there should be some remarks so that you can improve upon in the next paper. So that is important part. Now for the interview guidance thing, so I took guidance from Bliss Point. I took guidance from पिंक प्रोफेसर, आई थिंक सिद्धार्थ राठौर सर. मैंने उनसे भी गाइडेंस लिया था इस चीज़ के लिए. मैंने एक दो और कोचिंग से भी मॉक इंटरव्यू का लिया था, लेकिन आई थिंक इट इज़ द ब्लिस पॉइंट एंड पिंक प्रोफेसर सर, उनका काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू का. ब्लिस पॉइंट का स्पेशली अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग इन पर्सन कराते हैं, तो आपको एक फैमिलियरिटी हो जाती है, आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे बोलना है, राइट. जैसे कुछ आपको कि आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, लाइक वो बता देते हैं आपको कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है. और पर्टिकुलरली ब्लिस पॉइंट जो पैनल जो था, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया ओवर द टाइम कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो. अगर आप कॉम्प्लिसेंट भी हो रहे हो तो वो भी आप बता रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपका रिजल्ट आ जाता है अगस्त में, लेकिन आपका इंटरव्यू हो रहा है दिसंबर में. दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. आपको यहाँ पे अपने आप को टुगेदर गैदर करके रखना पड़ता है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पिंक प्रोफेसर सर ने मेरे को काफ़ी गाइड किया इन द डेफ प्रोसेस, लाइक डेफ को बनाने में भी, और हाउ आई कैन लाइक उन्होंने एक अच्छा खासा मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली. एंड चीज़ों को कैसे करना है वो उसमें भी काफ़ी उनसे हेल्प हुई. बाकी कोचिंग से भी किया था, लाइक इकोअलिक्स, एंड उनसे मैंने मॉक लिए थे. सो आई थिंक वन मॉक्स वर कंडक्टेड फ्रॉम देयर साइड. सो दीज आर द ऑल इंटरव्यू थिंग्स. बट इंटरव्यू के लिए आपको यू नीड टू थिंक दैट इट इज़ यस, knowledge is required. So people say that it is the test of your personality. Yes, it is the test of personality, but it is also sometimes becomes your test of knowledge, because the thing is that personality and knowledge is related in some way. That if you have a good good amount of knowledge base on the current thing, if you can relate the whatever happening today with your basic book thing, basic syllabus, then they understand that okay, this person is very much familiar with it. He is able to relate it, and he is able to grasp the concept, and he is able to apply that concept. So I would not say that it is just the test of personality, it is also the test of your knowledge. So you need to brush up your concepts, what you have done. That is very much important for you. So for me, like I revised what I could do. I remained in the contact of whatever I did prepare for written exam. And yes, this is something जो काफ़ी rigorous होता है, काफ़ी hectic होता है, but along with the job it become more hectic, but you have to do that. It is the challenge for you. And but main चीज़ ये है कि written exam आपका निकल गया है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Now coming to the notes part, yes,
नोट्स आर इम्पॉर्टेंट. कई लोग नोट्स पर्सन होते हैं, वो लोग बहुत, उनको नोट्स बनाना नहीं चलता है. फॉर मी आई एम नॉट ए नोट्स पर्सन, but I started writing the notes for those topics which were not available in just one place. So मेरे लिए प्रॉब्लम था टाइम, और टाइम नोट्स को बनाने में लगता है टाइम. सो मैं कहीं मैंने स्टार्ट ही जस्ट 6 महीने पहले किया है, तो मैं मेरे लिए नोट्स बना के और फिर उसको मैं रिवाइज भी कर पाऊँ, मैं सारे टॉपिक्स को भी ढूंढ पाऊँ, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो मैंने मैंने इसको बहुत स्पेसिफिक किया कि मैं उन चीज़ों के लिए नोट्स बनाऊंगा जिन चीज़ों के लिए मेरे पास कुछ मतलब वो होगा, राइट, मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर मेरे को बार बार रिवीजन करना है इन चीज़ों का. तो मैं नोट्स पर्सन नहीं हूँ, बट हाँ, अगर आपके केस में आपको हेल्प करता है नोट्स बनाना, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू, एंड इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल एज वेल. लाइक आई ऑल्सो से कि अगर मेरे पास सारी चीज़ों के नोट्स होते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड यार, क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होती है. आपको जब लिखते हो, जब आपको लगता है कि यार मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, बट नहीं यार, आपको जब आप रिवीजन करते हो ना, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड कि ओके, इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. So this is about the notes. You can start, you can do that. For me, I didn't do that very large amount. Like I think I have 1 or 2 register of notes, and that I have handwritten. I do not have any soft copy of that. So yes, this is something which is for the notes part. Yeah, so I think I have covered most of the aspects here. So you need to understand that this process is rigorous. This process will eat your mind, will eat your space, will eat your time. Everything will be there, but one thing should be there: your dedication, your support from your family. I think without that it will not be possible, because they are the basic thing which you have, which help you to decide to appear for this exam, right? So देखो, कुछ भी हो जाए, अगर आपके हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, and you have just wasted 4 to 5 days on that, वो टाइम चला जाता है वहाँ पे. It is not just wasting, but for the exam purpose you have just lost 4 or 5 days, which can be very important for you. So इन चीज़ों को नहीं देखना है, ये देखना है कि मेरे पास जो बचा है मुझे उसको कैसे अच्छे से करना है. मुझे याद है कि मैं जब मैं अप्रैल में था या मई के मंथ में था, जो एग्ज़ाम जून में था, तब मैंने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ना अप्रैल में. तो यह स्टार्टिंग किया था, हाँ, बट एग्जाम, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जनवरी से ही, और मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहा था, तो मुझे हेल्पफुल हुआ. लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ ए पर्सन इज स्टार्टिंग टू रीड इंडियन इकोनॉमिक्स इन जस्ट अप्रैल, and how much difficult for him it will be. So it was very hectic for me. It was very मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था पूरा का पूरा, बट मुझे करना था, मुझे पॉलिसी के लिए चाहिए था, मुझे पॉलिसी में जाना था, और मुझे ये क्रैक करना था. तो दिस हेल्प मी टू सर्वाइव्ड, कि हाँ, मुझे खड़ा रहना है, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, और वो ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक बार आपने एक रिटर्न एग्जाम दे दिया, उसके बाद यू विल हैव सम टाइम, आपके पास डेफिनेटली टाइम होगा. हाँ, तभी आपके लिए हेक्टिक हो सकती हैं चीज़ें अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल RBI DEPR, जो कि जनरली सब लोग देते हैं, मैंने भी दिया है. सो वो हेक्टिक होता है आपके लिए, बट आपको अगर रिटर्न एग्जाम आपका अच्छा गया है, यू विल गेट डेफिनेटली दिस. ट्राई टू कवर अप योर फुल पेपर इन योर रिटर्न एग्जाम. 200 नंबर का पेपर होता है, ट्राई कि आप 200 नंबर का अटैम्प्ट कर पाओ. मेरा आई थिंक एक ही पेपर था जो पूरा अटैम्प्ट हुआ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 4 पेपर्स, बिकॉज दे आर द 800 मार्क्स पेपर, राइट. तो मेरा एक ही पेपर था, आई थिंक जनरल इकोनॉमिक्स 3rd का पेपर था जो पूरा कंप्लीट हुआ था. मेरा बाकी पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, बट मैंने ट्राई किया कि क्वालिटी में मेंटेन करूं, चाहे क्वांटिटी से थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाए, बट क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तो कहीं पे अगर एग्जामिनर 8 मार्क्स दे रहा है तो वो 9 या 10 दे देगा, और वहाँ पे मैं उस चीज़ को रिकवरी कर दूंगा. तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी हर किसी के लिए सेंस में, है ना. तो ये चीज़ है, और आपके केस में काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बट यू हैव टू कीप योर everything together, everything manageable, and I think that is sufficient for you to do this. For interview part, yes, UPSC में interview लेना and UPSC में interview देना is very good experience, but yes, जब भी आप जाओगे UPSC में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि you are one of that person जो कि शायद लोग ड्रीम करते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू देने का, तुम वो हो. तो रिटर्न क्लियर हो गया है, तो यू हैव यू आर वन ऑफ द मोस्ट आई कैन से इंटेलिजेंट पर्सन, जो कि आप क्योंकि आप यूपीएससी जा रहे हो इंटरव्यू देने. सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम
फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम. आई विश कि आप नेक्स्ट साइकिल में आप जो भी अगर आप अच्छे से डेडिकेट रहोगे, अच्छे से हार्डवर्क करोगे, यू विल गेट डेफिनेटली इट. आई विश यू ए टन ऑफ लक. And yes, you can contact me. I think on LinkedIn and some other social sites for if you want some specific guidance or something. This is all from my side. Thank you so much.